हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक वेरिएबल पावर सप्लाई बनाएंगे। मैं इस वेरिएबल पावर सप्लाई में XL4016 बक कन्वर्टर यूज़ करूंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मेरा दूसरा चैनल है ज्ञानी टेक, उसको भी सब्सक्राइब करें और इसी तरह सपोर्ट करें। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहली चीज़ है XL4016 बक कन्वर्टर मॉड्यूल, LM2596 बक कन्वर्टर, डिजिटल वोल्ट एम्पेयर मिरर, 10K multi-10 potentiometer, knob, jumper wires। सबसे पहले मीटर की सप्लाई वायर्स को LM2596 मॉड्यूल की आउटपुट के साथ कनेक्ट करेंगे। LM2596 मॉड्यूल की आउटपुट 12 वोल्ट पे सेट है। अब पोटेंशियोमीटर के साथ वायर्स को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद XL4016 मॉड्यूल की वेरिएबल रजिस्टर को रिमूव कर लेंगे और इसकी जगह 10K पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद XL4016 मॉड्यूल के आउटपुट के साथ मीटर की सेंस वायर्स और आउटपुट के लिए वायर्स लगा लेंगे। इसके साथ ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं।